Yes, we'll start our training from today's the introduction cycle. So please open your cameras also. You will call. Yes. कैमराज ओपन करो तभी इंटरेक्ट कर पाएंगे सभी दूसरे के साथ, ऐसे नहीं हो पाएगा. So please open your cameras also. Otherwise, the meeting will not start. Hello, am I audible? Yes, sir. I can hear you. So is there any problem to open your camera? Please, everyone can No, open your nothing. cameras. Yes, please open your cameras. Everyone can open your cameras. These sessions are very interactive. That's why cameras is needed. If you can't open camera, session is not. Yes, there. Harshit, open camera. Okay. ओपन करो कैमरा फटाफट के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं. जितने भी अभी आते जुड़ रहे होंगे, जो कोई लेट हो रहा है, ठीक है. मेरे को ये बताओ किसी कोई फैमिलियर है यहाँ पर लिनक्स से? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, राइट. तो लैग हो रहा है, स्पीड में आपकी प्रॉब्लम है, मेरे स्पीड में प्रॉब्लम आ रही थोड़ी. माइक ओपन करो, कुछ तो बताओ. ये सर स्टार्ट करते हैं. मेरे को ये तो बताओ, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मेरी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है? हेलो, तैयार है नेटवर्क. मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन. ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? इज इट विजिबल और नॉट? इज इट विजिबल? Yes. लैग क्यों कर रहा है? मेरे को तो चल रहा है. एक सेकंड. अच्छा ठीक है, ध्यान से बस सारे कैमराज ओपन कर लो, सिर्फ मेरा कैमरा ओपन रहेगा, ठीक है. बस मेरे को अभी मेरा नेटवर्क इशू या फिर तुम्हारी साइड से किसी के नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ. तो तुम अपना थोड़ा बताते रहना, मेरे को सही चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है. लिनक्स का पहला सेशन है ये, थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है. तो सबके पास यहाँ पर लैपटॉप्स हैं. जिसके पास अगर लैपटॉप में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रहा है तो वो ऑनलाइन यूज करेगा कोकैल, ठीक है. कोकैल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा. लेकिन जिसका हो पा रहा है, जिसको चल जाएंगे, वो एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करेगा. आप नेट पर डालो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, ठीक है. जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कम है वो नहीं डालेगा, ठीक है. कुछ बोलो तो, मेरे को तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है. हेलो,
हेलो Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें वीक क्यों Hello. चल रही है क्लासेस? तुम हाँ जी। एटलीस्ट मेरे को बताओ तो चीजें कि कुछ समझ आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है, कुछ बताओ तो। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अगर ऐसे ही करना तो फिर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है, कुछ आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो? हाँ सर हाँ आवाज आ रही है। तो एक ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, ये सब कितना वो पता है यहाँ पर कि ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है? वर्चुअल बॉक्स किसके में डाउनलोड है? मेरा डाउनलोड नहीं किया। हाँ तो उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? यस, यू कैन डाउनलोड इट इन योर पीसी. Yes, I will explain in English also. Right. Go on the Google, type VirtualBox download like that. I will give you a demo. VirtualBox download for Windows. Right. There was a first link where you will click on it, then download it in your PC. Right. You will go there and you will just download the VirtualBox. So is the link here? No. Oracle VirtualBox. Yeah, this one is third link. Download VirtualBox for Windows 3. Right, you can click on it, download button, and download it from here. It will download. This one is an Opera setup. Wait. Yeah, that will. Like that, you will download that VirtualBox. Okay. Everyone can download it VirtualBox except those who have not enough configuration to download it. They will use the Cocalc website. Cocalc. This one. You can use it. Cocalc online Linux terminal. Right. You will sign in there. Those who haven't downloaded or those who are not downloading VirtualBox in their PC, they will use that website and sign in there or sign up there. If you are new for this website, you can sign up, and if you are not new for this, you can sign in. Create your account here. Gmail. You will use from Google. Okay. Will have to be done. Is there any problem to installing that VirtualBox or not? नो हो गया डाउनलोड. Okay. You can just double tap on it and just install it, that software. All have downloaded it or not?
This one is like that. You will double click on it and just press on the yes button. It will install in your PC. Next, just next. Do it next. By default, all the setting will install on your PC. Do nothing on pressing next. In my PC, already installed that VirtualBox. That's why it will give me a data file in use. That otherwise, in your PC, it will installing properly. Okay. All have done it or not? Yes, done. Okay. Everyone, please reply. Sir, I already downloaded Okay, no problem. VirtualBox. And in VirtualBox, you have created any VM machine or not? Like that. Yes, VM. Yeah, I created. Virtual machine in your, yes, you have created. In which setup, like Red Hat, Linux, or CentOS? Red Hat. You have already done the Red Hat machine. Okay. Is there anybody having any issue to downloading or installing that VirtualBox in your PC or not? Everyone is okay or comfortable to download it? Yes. Yes, sir. Okay. So you will just open your virtual machine, VirtualBox, and just press on new button. Press here. Before we pressing here, I will give you an a second. I will give you a software link. Please wait. Red Hat 8.2 is not there. I have uploaded. I will share it on the WhatsApp group after completing that meeting. Today is an introduction session only. Okay. So this is another platform, Cocal. Just note that cocal.com is another platform. You can sign in if you have an account on this website. If you have an account on this website, you can sign up. Okay. And just create a new project from download. View your Cocal project. Just go down. View your Cocal project. Just click here, and it will open new window. And just type your new project name. Like I already typed that new here. Try is already in my try first project. Right. It will show. Okay. You can go here also if you have created. Got it. तो मैं आपको थोड़ा सा इसके so I will move it on. When you will press on the new button, it will create for the new virtual machine. And the name of the virtual machine you can press here, like see here, Red Hat 8, Try, Vishu, Try. These all are the virtual machines. In my left side, these all are my different virtual machines which was set up in the VirtualBox. VirtualBox is the platform where you will install another operating system in your same machine. Right. If you have any doubt, please tell me or ask me your doubts. Is there any doubt till now? No, sir. Okay. So give it your name, your machine name, like Linux live machine live. Got it? And Yes. we will use that Red Hat machine, like Linux type and Red Hat. I will give you a link of the Red Hat VM machine. It is 64-bit. Like that, you will select on your machine. Got it? Yeah. Okay. Now you can press it on the next button.
These all four options you are already cleared. Like name is just on the display on the top of the virtual box, like that Red Hat 8, TY, Vishu, Try1, Red Hat 2, RHEL, Demo, Kali, RHA. Like that, these are different to differentiate the VM machine in your virtual box. This name is all about that. Okay. This is a machine folder where your machine folder, like meaning that where your virtual box. Got it? And the type, you can install your different types like Microsoft Windows, Linux, Solaris, BDS, and other also. And we will use only that Linux. Because of that, this live training is on the Linux. Got it? Yes. Yes. And version is a Red Hat. Got it? And now we will click on the next button. And this is the memory size for your machine. You can give that memory size around 2 GB, 2 GB or 1.5 GB. RAM size, you can decide it your RAM size. I will give my RAM size around 1785 MB. Got it? You can also, if you have more than 8 GB, you can give it on the 2 GB, 2.5 GB. If you haven't 8 GB, if you have only 4 GB RAM, you can give around 1.3, 1.2 GB. Okay. Got Okay, it or not? Yes, sir, I got it. Okay. I will give that. Wait for a minute. Is there any problem? Someone has any problem if I am speaking in English, Hindi? No. No, sir. No. Everyone comfortable in Hindi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because I am also comfortable in Hindi and English both, but I am more better comfortable to speak in Hindi. If I am speaking in Hindi, then I am more understandable or more you can understand. Got it? अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगा आपको, right? Yeah, okay, sir. Okay. So this is the hard disk. Create a virtual hard disk now. This option, create a new virtual hard disk. Virtual means कि हम जैसे कि हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर से खरीदते हैं, लाइक लैपटॉप्स हमने खरीदा है अपना. Wait for a minute, एक second please. Like this is a laptop where I will buy from the market, right? And this is a hard disk inbuilt in that and RAM, right? Yes, sir. And on the top of that, we will create that virtual box. We will install that virtual box. Virtual box gives that the virtualization. On the top of the hardware, this is hardware. On the top of the hardware, we will install that virtual machine. On virtual machine, give us that the platform. Screen lag हो रही है क्या मेरी? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, Yes. Screen load screen मेरी lag हो रही है? नहीं no, नहीं. sir. Okay. So virtual box, we have installed that virtual box. Virtual box give that the virtualization environment where we can install that different operating systems, right? These are all the different VM machines. And we will create that VM machine for them, that hard disks. Create a new hard disk now. Do not add a virtual hard disk. This option, first वाला option जो है वो virtual hard disk new नहीं create करने दे रहा है, ठीक है? और जो second option है वो virtual hard disk new create करने के लिए कह रहा है. Virtual hard disk मतलब कि जो आपके पास लैपटॉप है उसके ही थोड़ा सा space use कर लेगा अपने वाले virtual box के अंदर.
वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो हम डिफरेंट एंड डिफरेंट यहाँ पर ये मशीन्स मैंने बनाई हैं, तो इनके अंदर वो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेगा, जितना भी मैं इसको यहाँ पर स्पेस दूंगा, राइट। यूज एन एक्सिस्टिंग वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल, मीन्स कि मेरे पास पहले से ही कोई फाइल बनी हुई हो, मैं उसको यहाँ पर यूज कर लूँ। लाइक मेरे पास ये सब बनी हुई है यहाँ पर, देखो डिफरेंट एंड डिफरेंट मशीन्स के लिए, रेडिट 8 डेमो ट्राई 1 RHEL 8 ट्राई TY काली वीचो, ठीक है। तो हम इसके लिए सेपरेटली एक अलग से वर्चुअल बॉक्स की हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाह रहे हैं। गॉट इट। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। देन VDI मतलब वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज, आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, पहले वाला वर्चुअल बॉक्स का डिस्क इमेज, मतलब कि हम वर्चुअल बॉक्स के लिए करना चाह रहे हैं। नीचे वाला वर्चुअल हार्ड डिस्क है, वो अलग से लगती है, और वर्चुअल मशीन डिस्क मतलब हमको सिर्फ पहले वाला करना है, क्योंकि डिस्क इमेज है हमारे पास। जो मैं अभी आपको दूंगा वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर, वो उसके लिए है। आप सबसे पहले वाला क्लिक करना है, राइट। और ये डायनेमिक, अब ये यहाँ पर है स्टोरेज, जो भी आप हार्ड डिस्क से अपना स्टोरेज लोगे वो डायनेमिक एलोकेटेड लोगे या फिक्स्ड एलोकेटेड, मतलब कि अगर आपने एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज। This is the hard disk of the 1 TB hard disk in your laptop, and you can borrow around 80 GB 80 GB 80 GB space in your virtual machine, virtual box, right? Then this dynamically means if you can store in your hard disk like your files like 2 GB, so it can only borrow from here only 2 GB, not only 80 GB। पूरी की पूरी 80 GB नहीं उठाएगा, सिर्फ ओनली 2 GB। जितना भी आप इसके अंदर स्टोर करोगे उतना उतना स्पेस लेता रहेगा। डायनेमिकली मींस ये नॉट फिक्स्ड नहीं करेंगे हम इसको। यहाँ पर 80 GB हम उसको मैक्सिमम अपनी लिमिट दे देंगे कि हम 80 GB तक ले सकते हैं, 80 GB के बाद नहीं लेंगे, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। गॉट इट। समझ आई ये बात कि हम ना Yes, यहाँ पर sir. डायनेमिकली दे रहे हैं कि जितनी इसको स्पेस लेनी होगी, एक मैक्सिमम रेंज दे रहे हैं हम 80 GB। 80 GB से ऊपर नहीं लेगा। अगर हम जितना भी स्टोर इसके अंदर करने हैं 8 GB 9 GB 10 GB, उतना उतना स्पेस यहाँ से लेता रहेगा इस टीबी के अंदर। बट एक हम अपनी अपर लिमिट सेट कर देंगे 80 GB। गॉट इट। इतना समझ आया सबको कि हम ये ऑप्शंस क्यों कर रहे हैं? बहुत से को डाउनलोड तो कर लेते हैं, बट डाउनलोड करने के बाद ये ऑप्शन नहीं पता होता, बस क्लिक 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 करते रहते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। एटलीस्ट पता तो हो कि बैकएंड पर चल क्या रही है चीजें। Here you will set the size of your hard disk। यहाँ से तुम अपना हार्ड डिस्क का साइज सेट कर सकते हो कि कितने तुम्हें देना है। I will give around 100 GB or 80 GB। You can also like that। I will give 80 GB। Okay, I will give 80 GB। Got it। यहाँ से भी आप लिख सकते हो। इतना समझ आया? हाँ, मेरे sir. लैपटॉप में 1 TB है, 1 TB में से मैं 80 GB अपनी इस वाली मशीन को दे रहा हूँ, जो अपनी न्यू मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पूरा पूरा 80 GB चल जाएगा। जितना भी मैं इसके अंदर स्टोरेज करूंगा, जितना भी मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा अपनी फाइल्स, उतना उतना डायनेमिकली उठाता रहेगा, मतलब वहां से उसके अंदर स्टोर करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी 80 पर कैप लग जाएगी। कैप नहीं लगेगी। कैप मतलब कि पूरा का पूरा 80 फिक्स्ड नहीं हो जाएगा, डायनेमिकली रहेगा। गॉट इट। देन दिस विल क्रिएट लाइक दैट Linux Live। You all got there? Hema, Hemant, you are understand? Yes, sir. Yeah, you understand what I am speaking in Hindi or not? I understand, sir, but can you continue with English, sir? It will be more helpful. Yeah, it will be more helpful, but there are lots of the learners who are not that much comfortable in English. That's why I am also speaking Hindi. So, could you Is- use both the languages? Yes, I Yes, will sir, I use. can also. Yes, tell me. I can You also can use understand both the languages, sir. So both it's languages. English and Hindi both. Okay, Hemant, you are comfortable in Hindi or not? Please tell me frankly.
हेमंत आपको Not much, हिंदी sir. समझ I can understand, but ओके आपको जितना अभी तक मैंने बताया सारा समझ आया है बिकॉज आई एम sir, till बिकॉज माय now I will. Understand. पार्डन प्लीज Till now, what you said, I understand, sir. okay so we'll start in Hindi and English both got it so here is a Yes, sir. tile here is a tile like a Linux Live in your VirtualBox machine also there is a tile got it there is a new tile like that in my VirtualBox there is so many tiles मेरी VirtualBox मशीन के अंदर VirtualBox जो स्पेस है ये यहाँ पर different and different tiles है मतलब different and different VirtualBox machines है there are so many VirtualBox which was I have created earlier and today I have created only Linux Live tile got it Yes, and sir. just press on it इस पर press करो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसकी settings पर जाओ just click on it settings there is a lots of the settings which was will set now first was the section that is journal section there is no basic settings like you can change your Linux or you can change your tile name from here also got it and type Linux these all are the by default setting you cannot change you should not change here from here because we'll install that Linux machine why you can change मतलब आपको change ही क्यों करना है जब हम Linux ही चला रहे हैं got it otherwise you can change here if you can if you want to change अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो got it अब ये एडवांस सेटिंग में स्नैपशॉट फोल्डर तो यही है कि जहां पर हमारा ये सारा डेटा इस मशीन का इस पर्टिकुलर मशीन का लिनक्स लाइव मशीन का जो डेटा है वो यहाँ पर इसके अंदर जाके सेव होएगा इस वाले फोल्डर्स के अंदर आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है अब शेयर्ड क्लिपबोर्ड यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट डिसेबल आता है तो यहाँ से हम एनेबल कर सकते हैं मतलब कि होस्ट टू गेस्ट होस्ट क्या होता है अब मैं एक चीज पहले आपको भी बता दूं होस्ट क्या होता है गेस्ट क्या होता है this is our window and this is our Linux where we are installed at host is this window is the host and guest is the Linux got it everyone is got it or not is there any problem I think No, so. sir. okay so listen that one important thing after 10 minutes this meeting will end so you can join that the same link from the WhatsApp group got it Okay, sir. Repeat, sir. after 10 minutes this meeting will end up 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी इसके बाद Okay, आपको sir. सेम लिंक पर जाना है और सेम लिंक को ज्वाइन करना है गॉट इट Okay, sir. Okay, sir. so this is your window where you have installed that your VirtualBox machine and this is a Linux and window host name window is the host which help you to install that the Linux machine got it if you can अगर आपको कुछ चीजें लिनक्स से लाकर यहाँ से लिनक्स से लाकर अपने विंडो में कॉपी करना है तो आपको यहाँ से एनेबल करना होगा गेस्ट टू होस्ट और कुछ चीजें यहाँ से अगर यहाँ पर पहुंचानी है तो होस्ट टू गेस्ट समझ आई इतनी बात कि मैं ये ऑप्शन क्यों कह रहा था सी देयर गेस्ट टू होस्ट और होस्ट टू गेस्ट एंड बाय डायरेक्शनल मींस both directional are possible like this listen that guest or host you can this guest to host this is only one option here and host to guest this is another option and bidirectional means this and this both you can अगर आपको कुछ चीज यहाँ पर कॉपी करनी है मतलब कि यहाँ पर कुछ चीज कॉपी करनी है कि यहाँ पर विंडो में आपके पास कोई एक फाइल है उस फाइल को जैसे कि इमेज होगी कोई इमेज उस इमेज को यहाँ पर कॉपी करके लाना है तो आपको यहाँ पर अपना एनेबल कर सकते हैं दो ऑप्शन होस्ट टू गेस्ट भी एनेबल कर सकते हैं क्योंकि इधर से इधर पहुंचाना डेटा और बाय डायरेक्शनल भी ऑन कर सकते हैं बाय डायरेक्शनल में दोनों साइड में हम कॉपी कर सकते हैं डेटा मतलब कि जो डेटा मेरा इस मशीन में
उसको मैं इधर ले जा सकता हूँ, जो मेरा डेटा इस मशीन में है उसको मैं इधर ले जा सकता हूँ। गॉट इट एवरीवन? समझ आया सबको? ये चार Yes, ऑप्शन sir. है सर मतलब। रिपीट कर रिपीट करूँ दोबारा से? ओके लिसन, दिस इज अ गेस्ट इज अ लिनक्स। गेस्ट मतलब कि जैसे कि आपका कोई घर हो गया है, घर आपका विंडो है, विंडो आपका घर है और विंडो आपका होस्ट हो गया है। होस्ट मतलब कि जो उसको चला रहा है, मतलब कि जैसे कि घर का मालिक होस्ट हो गया, ठीक है। और जो गेस्ट आएंगे, जैसे कि आपके घर में दूसरे बंदे आते हैं गेस्ट, तो उनको गेस्ट कहते हैं। कि मतलब आपके घर में ये बंदे आए हैं, अगर आपको यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं, आपकी इमेज हो गई, आपकी वीडियोस हो गई, आपकी मूवीज हो गई है, तो अगर आपको वो इधर डालनी है, मतलब कि इधर से इधर कॉपी करना है, ठीक है, तो गेस्ट टू होस्ट वाला ऑप्शन एनेबल कर देंगे। इधर देखो, गेस्ट टू होस्ट वाला ऑप्शन, ये थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। और अगर कोई चीज यहाँ पर आपकी फाइल्स पड़ी हैं बहुत सारी, उसको इधर कॉपी करना है, तो होस्ट टू गेस्ट, मतलब कि हम अपने होस्ट से कुछ डेटा उठा के ला रहे हैं, उसको हम अपने गेस्ट में पेस्ट करना चाह रहे हैं। गॉट इट? Yes, sir. और यस और सर अगर दोनों ही चीज करनी है कि भाई गो होस्ट से गेस्ट में और गेस्ट से होस्ट में, दोनों का बाई डायरेक्शनल ऑप्शन है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों साइड ऑप्शनल होना चाहिए। समझ आई इतनी बात? कि दोनों साइड एनेबल रहे, कि मैं इधर से इधर भी कॉपी कर लूं डेटा को, डेटा को इधर से इधर भी कॉपी कर लूं। ये तो समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. एंड फोर दिस डिसेबल्ड मींस कि कहीं से कुछ भी कॉपी ना हो। चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए हैं इतने? किसी को अगर डाउट है तो पूछ लेना। हाँ सर दिस इज डिस्क्रिप्शन की, एनेबल डिस्क डिस्क्रिप्शन की। यू कैन, आपको ये इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट छोड़ देना। नाउ वी कैन मूव ऑन द सेकंड टैब, दैट इज सिस्टम टैब। देयर इज अ मदरबोर्ड, यू कैन यू कैन चेंज योर रैम फ्रॉम हियर आल्सो। हमने जब हम ये वाली टाइल क्रिएट कर रहे थे यहाँ पर, मतलब कि हम न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, तो हमने उस टाइम कुछ मेमोरी दी थी अपनी, दी थी ना, तो हमने वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं उसको, अगर हमें बाद में लग रहा हो कि हमारी मशीन हैंग कर रही है। मशीन हैंग कब करती है? आपका विंडो हैंग कब करता है? आपका विंडो हैंग तब करता है जब आपके पास कम रैम हो, कम प्रोसेसर हो, कम कुछ हो, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने बढ़ा भी सकता हूँ, कितनी भी रैम दे सकता हूँ, बट मैं इसको सिर्फ अपने 1.5 रैम देना चाह रहा हूँ, 1.5 GB रैम, ठीक है। मैंने इसको इतनी रैम दे दी है। अभी बूट ऑर्डर यही रहने देना, अभी बूट ऑर्डर में कोई चेंज नहीं करना है, मैं बूट ऑर्डर आपको बाद में समझाऊंगा कल को, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही रहने देना बूट ऑर्डर। गॉट इट? चिपसेट बाय डिफॉल्ट रहने देना, चिपसेट की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस आपको चेंज करना है। Yes, sir. पॉइंटिंग डिवाइस आपको यूएसबी मल्टी टच करना है। ये एनेबल इनपुट आउटपुट PIC, ये सब बाय डिफॉल्ट ही रहने देना, बस आपको पॉइंटिंग डिवाइस चेंज करना है अपना। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कि, दोबारा समझा देता हूँ, पॉइंटिंग डिवाइस मल्टी टच मतलब कि जैसे कि आपकी वर्चुअल मशीन हो गई, एक सेकंड, ये आपकी वर्चुअल मशीन हो गई है। वर्चुअल मशीन में आपने बनाया आज का अपना लिनक्स लाइव मशीन, लिनक्स लाइव मशीन आपने क्रिएट कर लिया। अब आपने इसमें क्रिएट कर लिया पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब कि अगर मैं अपना कर्सर चला रहा हूँ तो मेरा कर्सर इसके अंदर ही चलेगा, इससे बाहर नहीं जा पाएगा। मतलब मैं कोशिश करूंगा इससे बाहर ले जाने की, विंडो मेरी ही है, ये मेरी विंडो है, मैं इससे बाहर नहीं जा पाऊंगा। अपना पॉइंटर जो मेरा ये भी कर्सर चल रहा है ना, जहां पर मैं पेन चला रहा हूँ अपना, मैं इससे बाहर नहीं जा पाऊंगा इस वाली मशीन से, मतलब कि जो इसका इंटरफेस है, मतलब मेरा पॉइंटर यहीं पर घूमेगा इसके अंदर, इसके अंदर कहीं भी चला सकता हूँ, लिनक्स मशीन के अंदर, लिनक्स लाइव मशीन के अंदर। गॉट इट? सो मेरे को डबल करना है, मतलब कि बाहर भी चल जाए और अंदर भी चल जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पर यूएसबी मल्टी टच टैबलेट करा रहा हूँ, मतलब कि आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो उसको और मैं बाहर भी यूज कर सकता हूँ। गॉट इट? ये तो समझ आया? Yes, sir. प्रोसेसर sir. यहाँ पर आप जैसे कि अपने लैपटॉप लेने जाते हो तो उसके अंदर प्रोसेसर्स होते हैं कि कितने प्रोसेसर का है, कितने CPU लगे हुए हैं उसके अंदर, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 ही लगा रहे हैं,
एग्जीक्यूशन कैप 100 रखना कि जो भी एग्जीक्यूशन मतलब कि जो भी हमने एक प्रोसेसर दिया, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, कितने भी दे दो, बट ज्यादा मत देना, क्योंकि फिर अदरवाइज अगर इसको ज्यादा दे दिए तो आपका सारे प्रोसेसर इस वाली मशीन के लिए चल जाएंगे, और जो आपकी विंडो बैकएंड पर रन कर रही है, क्योंकि विंडो के ऊपर ही वर्चुअल मशीन रन कर रही है, वर्चुअल मशीन को अगर आप ज्यादा प्रोसेसर दे दोगे तो विंडो को पर कम पड़ जाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैप मतलब कि पूरा का पूरा 100% यूज कर ले, जो हमने एक सीपीयू दिया है उसको 100% यूज करे। अगर आप 50 देना चाह रहे हो तो 50 भी दे सकते हो, बट 50 इनवैलिड हो जाएगा, 50 से तो ऊपर देना पड़ेगा यहाँ से, बट आप उसको पूरा 100 देना कि इस जो हमने एक सीपीयू दिया है उसको पूरी अच्छी तरह से यूज कर पाए। गॉट इट? एक्सेलरेशन ये सब बाय डिफॉल्ट रहने देना, इसको मत छेड़ना। आप डिस्प्ले पर आ जाते हैं, डिस्प्ले में स्क्रीन है, ये सब बाय डिफॉल्ट रहेगा। मॉनिटर काउंट आप बढ़ा सकते हो अगर बढ़ाना है तो, आपको थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। अगर बस 2 से ज्यादा मत करना। ठीक है, वैसे तो एक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब बाय डिफॉल्ट रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। स्टोरेज में आ जाओ। स्टोरेज में अभी मेरे पास एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पर एम्प्टी पर क्लिक करोगे तो मैं आपको आज रात को शेयर कर दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना, मतलब कि उसको डाउनलोड कर लेना उस फाइल को। तो आप यहाँ से जाके उस फाइल को ऐसे क्लिक कर लेना, मतलब कि चूज कर लेना जहां पर आपने डाउनलोड की होगी वो। गॉट इट? मतलब इतना समझ आया ना आपको? किसी को कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। No, sir. ओके, यहाँ तक का सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक में? हेलो, यस, टेल मी। ये आप फाइल जो देंगे विच फाइल? जो डाउनलोड हाँ करने हाँ, जो मैं फाइल आपको दूंगा डाउनलोड करने के लिए, वो आप डाउनलोड कर लेना। मतलब कि वो हाँ। आईएसओ फाइल है। आईएसओ मतलब कि जो हम यहाँ पर लिनक्स डाउनलोड करेंगे उसकी फाइल है वो, रेड हैट की आईएसओ फाइल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल, अदरवाइज आई विल शेयर इट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इट। गॉट इट? मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस आपको उस लिंक से जाके क्लिक डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ही आपको बस मैं अभी समझा रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको ये ऐसे करके यहाँ पर चूज हार्ड डिस्क या फिर क्रिएट कर लेना अपने हिसाब से। चूज अ डिस्क फाइल आ जाएगा, आपको पूरा पूरा फोल्डर खुल जाएगा ऐसे करके। ऐसे खुल के यहाँ पर आपने जो भी चीज डाउनलोड कर रखी होगी, डाउनलोड्स में जाके वहां पर आप सेलेक्ट कर लेना, तो आपके यहाँ पर ऐसे आ जाएगा जैसे कि मेरे आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके जो यहाँ पर एम्प्टी लिखा हुआ था, हियर व्हेन previously it was written at empty, when I clicked from here then it will return that is RHEL